Election petition, sir. Petition item number 2. Sir, list of witnesses. I have filed list of witness, my lord, also an application for production of document. And my lord, I have moved application, my lord, to incorporate, my lord, amend the issue number 1 as framed by my lord. And my lord, in regard to the issue number 2, my lord, my submission is, my lord, we are. सर सवाल इस बात का है, दो चीजें हैं जी। अगर फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट है तब हमारे पास जुरिसडिक्शन नहीं है। इतना आप इतना ये हमने इशू बनाया है, इसको आपको आर्ग्यू करना है। False, my सर lord, प्लीज, there are two aspects of सर the false. प्लीज सुनिए। फॉल्स का मतलब होता है मैंने इशू किया श्रीवास्तव जी को, परंतु श्रीवास्तव जी उस कास्ट को बिलोंग नहीं करते। Yes, then it will go to the. अब श्रीवास्तव जी खुद अपनी जेब से बना के ले आए और किसी भी अथॉरिटी ने इशू नहीं किया हुआ, दैट विल बी अ फोर्स्ड सर्टिफिकेट। फोर्स्ड सर्टिफिकेट के लिए फिर मादरी पाटल नहीं लगेगा। मेरा यही कहना है। तो भैया पहले हम फाइंडिंग देंगे ना कि वो फॉल्स है, आपकी गवाही क्या आती है? मेरा श्रीवास्तव जी, हम जो है इलेक्शन पिटीशन में इट हैज टू बी ट्राइड एज अ सिविल सूट, दैट इज ऑल। ये हम पिटीशन में नहीं है, आपकी गवाही के बाद हम डिसाइड करेंगे वेदर इट इज अ फॉल्स सर्टिफिकेट और इट इज अ फोर्स्ड सर्टिफिकेट, और उसमें फाइंडिंग देने के बाद फिर ये डिसाइड करेंगे कि ये हम यहाँ कर सकते हैं कि हमको वहां भेजना पड़ेगा। दैट इज ऑल। इशू नंबर 1 में हमारा कहना है कि आपने जो फोर्स्ड फॉल्स के साथ उसके साथ ये भी अगर ऐड कर दें कि इट हैज नॉट बीन इशूड इन अकॉर्डेंस, इट डज नॉट फुलफिल। पता नहीं सर, ये आई एम वेरी मच क्लियर, आई एम वेरी मच क्लियर इन माय माइंड। If forced means not issued by the authority, created by the person by himself. This is forced. False, issued by the authority, but on misrepresentation, thereby declaring that a person belongs to a particular caste, but in fact he does not belong to that particular caste. बस सीधी सी बात है। अगर मैंने आपसे ये कहा, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। फोर्स में सर ये होता है कि कूट रचना, मतलब हाथ से जोड़ दिया, घटा दिया, कुछ लिख दिया, कुछ भी पता नहीं सर, ये आपकी सोच है। फोर्स में आ जाता है, वो फॉल्स में आता है सर। आप आईपीसी पढ़िए, आप आईपीसी पढ़िए सर। आपकी लिस्ट क्या है सर? टू विटनेसेस एप्लीकेशन, आप एक तो रिटर्निंग ऑफिसर को चाहते हैं और एक एसडीओ जिसने सर्टिफिकेट जारी। आपको अपनी गवाही नहीं करानी है? हमने ऊपर लिखा ना, अपार्ट फ्रॉम एग्जाम। सर ऐसा नहीं होता है सर, आप सीधा लिखिए हमको ये 3 विटनेस चाहिए, 2 ये सरकारी विटनेस है, वो इस कारण से चाहिए, बस सीधी सी बात। आप अपना नाम तो दीजिए, आज ही दे दीजिए ना। सर आपके आईए नंबर कौन सा है? ये है सर आईए नंबर 11286। 11286। दिस एग्जाम इज रिटन एंड आल्सो पे फॉर इश्यूएंस। अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं। आई हर्ड ऑन आईए नंबर 11286/2024 an application under order 16 rule 1 CPC for issuance of summons to the witnesses. It is submitted by counsel for petitioner that in all petitioner wants to examine only 3 witnesses, namely himself, number 2, namely number 1 himself, oblique Kundan Malviya, oblique petitioner, comma number 2, sub-divisional officer cum certifying officer Khandwa, and number 3 returning officer Khandwa, and has prayed that summons be issued to sub-divisional officer cum certifying officer Khandwa for his appearing as a witness, along with the direction to produce record pertaining to issuance of caste certificate bearing token number 1725/17/1739/0708, case number 2581/07-08 dated 29/11/2007, and has also prayed that returning summons be also issued to returning officer Khandwa to appear along with record record pertaining to the nomination paper and other documents submitted by respondent number 1. Therefore, this application is allowed. किस तारीख को लगाएं सर? This case on 2nd of July 2024 for examination. Accordingly, the case is fixed for recording of witnesses as under 2nd of July 2024 for examination of petitioner oblique Kundan Malviya. 3rd of July 2024, sub-divisional officer cum certifying officer Khandwa, who shall appear along with record pertaining to issuance of caste certificate bearing token number को पूरा आ जाएगा। 4th of July 2024 for examination of returning officer Khandwa, who shall appear along with the record of complete record of nomination form and other documents submitted by respondent number 1. The office is directed to specifically mention in the summons that the concerning witness is required to appear along with the record as already mentioned in this order. List on 2nd of July 2024. Payment of cost of IA number 11284/2024. An objection raised by the petitioner with regard to the framing of issues. This court has framed issue number 2 with regard to the effect as to whether this court will have a jurisdiction to decide the question of caste certificate in the light of judgment passed by Supreme Court in the case of Shumari Madhuri Patil and another versus Additional Commissioner Tribal Development and others reported in 1994, Volume 6, SCC 241. It is submitted that the petitioner has not alleged that the respondent number 1 belongs to some other caste and is claiming herself to be a member of scheduled caste, and therefore, sir, मैं आपकी इलेक्शन पिटीशन यही खारिज कर सकता हूँ, किसी को प्रिलिमिनरी इशू बनाते हैं। जब आप कह नहीं रहे कि उस कास्ट को ही बिलोंगिंग करती है, इसको आपने डिस्प्यूट ही नहीं किया। अब आप नहीं सर, जब आपका कहना ही नहीं है कि वो उस कास्ट को बिलोंग नहीं करती है। हमारा ये कहना नहीं है कि उस कास्ट को बिलोंग करती है या नहीं करती, हमारा कहना ये है कि जो सर्टिफिकेट the petitioner has not alleged that the respondent number 1 belongs to some other caste.
तो किस कास्ट को बिलोंग करती है? I don't know, sir. This is your stand. दैट डजंट मीन कि वो उस कास्ट शेड्यूल कास्ट को बिलोंग सर करती सर सीपीसी में है, प्लीडिंग्स के ऊपर आप बताइए कि आपका केस क्या है. हम इनको प्रिलिमिनरी इशू बना के आज डिसाइड कर देंगे सर. हमारा केस ये है कि जो सर्टिफिकेट उन्होंने फाइल किया है फोर्स द फॉल्स है और इट हैज नॉट बीन इशूड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. The petitioner has not alleged that. पहले वो नोटिस वाला सा बता दीजिए. The petition it is submitted by counsel for petitioner that this court has framed the issue number 2, which reads as under. It is further submitted that the petitioner has not alleged that the respondent number 1 belongs to some other caste and claiming herself to be the member of scheduled caste. Therefore, the judgment rendered in Kumari Madhuri Patil is not applicable and no issue is required to be framed. It is submitted by counsel for petitioner that the only contention of the petitioner is that the caste certificate relied upon by the respondent number 1. आप बताइए क्या एग्जैक्ट वर्ड यूज करना है? Is a forced and false and not issued. Is a forged, false and not issued in accordance with law. The law is required. Forged का क्या मतलब आपके हिसाब से? That document does not contain necessary contents of the certificate as It required. is submitted that according to the petitioner, the caste certificate relied upon by the respondent number 1 is forged, आगे forged, false and illegal. And illegally issued. And illegal. Illegal. Issued or not, that is to be decided. नहीं सर, आपको प्लीडिंग चाहिए मुझे. नहीं तो प्लीडिंग तो है ना. मुझे आप बताइए ना कौन सी प्लीडिंग है सर? That the caste dispute. सर पैराग्राफ सर. That the commission had issued a notification. That नहीं. Page 7 में para A. Incorrect information about her. Had earlier contested. 12 में A. अच्छा 12 का A. कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा है सर? अच्छा कहाँ तक हुआ था? नहीं वो पूरी एप्लीकेशन तक का आ गया. It is submitted that. आप तो इसी का आगे कर दो, मैं उसको काट दूंगा जो मुझे नहीं हटाने देना. It is submitted that in the caste certificate that the caste certificate which has been relied upon by the respondent number 1 is an incomplete caste certificate and does not contain the declaration as to whether she belongs to scheduled caste or scheduled tribe. Does not contain a certificate whether she belongs to scheduled caste and scheduled tribe. Therefore, it is submitted that the contention of the election petitioner is that such a caste certificate is invalid caste certificate. Next, consider the submissions made by counsel for the petitioner. This court has framed issue number 2 by using the word forged caste certificate. Forged caste certificate would mean that certificate not issued by the authority at all. And if the certificate has not been issued by the authority, then whether the judgment passed by the Supreme Court in the case of Madhuri Patil Supra would apply or not, that shall be decided by this court. And if the certificate has been issued by the authority, then whether it was rightly issued or wrongly issued would certainly take out the case out of the jurisdiction of this court. Therefore, this court is of considered opinion that there is no need to delete this issue number 2. Accordingly, IA number 11284/2024 is hereby rejected. 11356/2024. अब आपका जो पहले वाला ऑर्डर था ना 11284 वाला 286 वाला वो आ जाएगा. उसके बाद फिर 11356/2024. Since this court has already directed the returning officer 177, Khandwa constituency to produce the nomination paper and other documents submitted by respondent number 1 along with her nomination paper. Therefore, no separate order is required on this application. Accordingly, this application is disposed of. 11359/2024, an application for modification of issue number 1 for the reasons assigned for disposing of IA number 11284/2024. No separate order is required, and IA number 11359/2024 is hereby rejected. तो 11284 और 11359 पहले दोनों रिजेक्ट होंगी. फिर 11286 का ऑर्डर आएगा, उसमें नोटिसेस जाएंगे और 11356 का वो डिस्पोज ऑफ होगी. List on 2nd of July 2024 for examination of petitioner. पेमेंट ऑफ कास्ट के लिए रजिस्ट्री विल नहीं लिखा गया है क्या? रिलीफ एंड कॉस्ट लिखा तो हुआ है नहीं. ये जो आएंगे विटनेसेस दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सो टीएडी हैज टू बी पेड बाय. अच्छा बाय द पिटिशनर. यस, उसमें कर दीजिएगा जो पहली एप्लीकेशन जो अलाउ हो रही विटनेसेस. द पिटिशनर इज डायरेक्टेड टू डिपॉजिट द necessary TADA for appearance of the witnesses along with
the process fee.